Why you all are aware? For the simple reason that you have taken a lot of efforts in deciding whether you need to take admission at Unique Academy or not. Why I'm saying so? Because in taking admission, you will be required to pay near about 1 lakh of rupees. So you must be finding out whether you will be getting the worth of 1 lakh of rupees which you will be spending or not. And do you know that is also an economic decision? Few of you must have approached the admission cell that you will be attending demo lectures. And then you will be deciding whether you should take admission or not. So that decision itself is based on economic principles. So the subject is not very old to you. The principles are being applied by you on day-to-day basis. The only concern is that you may at times realize or at times you may not realize. There are different decisions which you have taken right from the morning. And those decisions are probably economic decisions. Your decision whether to dine in a 5-star hotel or to dine at your home. Your decision what to wear and what not to. Your decision whether to come here by BMW, Mercedes or public transport. Your decision whether to prepare for UPSC in Pune or at Delhi. All these are economic decisions. You must have taken. The only concern is that you must not have realized that these are economic decisions. As far as preparation for economics for UPSC is concerned, let me tell you that this subject, no doubt, is bit difficult as compared to other subjects. Difficult does not mean that you cannot understand it. Thing is that you need to apply efforts. Don't have this perception कि ये कथा कहानी है और मैं बोलते जाऊंगा और तुम सुनते जाओगे और तुम्हें समझ में आ जाएगी. You need to put on efforts. But at the same time, you should also understand that a subject like economics, when you start understanding that this subject will give, or you will be enjoying this subject like anything. The only thing is that with your efforts, you need to start understanding the conceptual or concepts of this particular subject. Today, in the overall discussion, I'll be giving you an introduction of what economics is. Second part, I'll be talking about the overall syllabus of economics or economic section, both from prelims and mains perspective. I'll also be discussing with you do's and don'ts in economics. And last part will be conclusion part, wherein I'll be giving certain tips where you can develop
your reading and writing skills. See, talking about economics, in your graduation days, in your BCom, or if you have done BA economics, or if you have referred to economics or subject or topics related to economics in your graduation, I think you are quite aware about these particular subjects. This subject involves a lot of jargons, lot of graphs, lot of tables, lot of mathematical applications, and that's why at the end you can conclude that this subject is completely dry, and the teachers who teach this subject are also very, very dry. My dear students, neither the subject is dry, nor the teachers who teach this subject are dry. A subject becomes dry when, as a teacher, when I'm not able to make you understand, when I'm not able to simplify the concepts to you, when I'm not able to relate those subjects or concepts related to those subjects with your day-to-day life, then that subject becomes dry. But as I told you, that this subject on day-to-day basis is applied. I'll give you an example. Have you ever experienced at your home that when the prices of few vegetables increase, like tomato, then your mother starts becoming selective as far as use of tomato at your homes are concerned? Very selective. But at the same time, when the prices of tomatoes goes down, I should not say, you must have experienced कि आपके घर में टोमेटिनो फेस्टिवल होता है. See, what do these mean? This simply means that consumer behavior is largely influenced by the price of that particular product. Similarly, if you can analyze the behavioral part of your mom who cooks in the kitchen, when the same commodity is very, very costly, मान लीजिए कि onion बहुत costly है, 100 rupees per kg. थोड़ा सा chopping style देखना अपनी मम्मा का. She will cut the onions as if she is cutting some precious metal. एक भी सेल वेस्ट ना हो. बट वही ओनियन अगर 10 rupees per kg है, see the chopping style. Simply, the commodity in relative terms has become cheaper. Now, these all are based on economic principles. At your homes, in few of the celebrations, in Indian society, we always experience that our relatives should gift us. So depending upon the gifts which we are getting, we categorize the different set of relatives. Very good relatives, and relatives like me, so सिर्फ birthday wish करके छोड़ देते. Have you ever experienced that whenever such things, a particular function takes place at your home, have you ever experienced that when the function gets over,
In the midnight, there is a parliamentary discussion at your home कि किसने क्या दिया था. गिफ्ट है, तोहफा है, उसकी कीमत नहीं, देने वाले की नीयत देखी जाती है. नीयत नहीं, कीमत देखी जाती है. एंड दैट्स व्हाट इज इकोनॉमिक्स. अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं यहां पर क्यों हूं और मैं आंसर दूं कि आई लाइक इकोनॉमिक्स, आई लव इकोनॉमिक्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टीच यू इकोनॉमिक्स, तो तुम्हारा आंसर होगा कि सर डोंट ब्लफ अस. सही रीजन यही है कि मैं पैसे के लिए यहां पर. अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और तुम बोलो कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, तो मैं भी यही बोलूंगा कि मुझे छोड़ो, समाज सेवा का डेफिनेशन मत दो. रीजन्स ultimate objective is something else. You also want to enjoy comforts and luxury, in whatever form it may be. So the reason why you are here, the reason why I am here, the reason why this institution exists, the reason why your parents each and every day go to offices, the reasons are purely economics. Going forward, if I say that those who are sitting together, let's see, if today she offers her tea कि चलो चाय पीते हैं, पैसा खुद नहीं दिया, अगले दिन भी गई तो इसी ने पैसे दिए. थर्ड डे शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट शी शुड पे फॉर हर, बट वो नहीं पे की, तो बताओ तुम अगले दिन उसको लेकर जाएगी क्या चाय पीने के लिए? अगर जाओगी तो हम लोग भी आएंगे. आप लोग क्या करते हो? यू टेल मी द आंसर कि you also expect the same from your friends or not? Good friends, यहाँ good का मतलब different होता है इकोनॉमिक्स में. See, I always tell when the people meet together, a sociologist में से कि उसके social region है, या पॉलिटिकल साइंटिस्ट में से उसके पॉलिटिकल रीजन है. मैं इकोनॉमिक्स का बंदा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम साथ में बैठे हो, उसके पीछे भी इकोनॉमिक रीजन है. आप देखा होगा गांव में, अगर एक नेबर दूसरे नेबर को कभी कुछ घट जाता है तो बाउल में पूरा पैक करके और भर कर दिया जाता है. जानते हो बाउल में ऐसा क्यों दिया जाता है? So that you can get same quantity in return. नहीं तो देखो अगली बार कोई मांगे और तुम देखो देने में कैसे तुम्हारे बात होती. इनकी बार बार की आदत है मांगने की. See, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, I'm not telling you what is good and what is not good. मैं एक religious leader नहीं हूं to tell you. What I'm trying to tell you that with all of us there is constraint, and that constraint is of limited resource, and that's why we all of us behave in that pattern. And due to that limited constraint called limited resource, you ask the admission counselor to attend certain demo lecture because you are going to spend 1 lakh of rupees. So definitely you will try to find out whether you will be getting the worth of that 1 lakh of rupee which you will be spending or not. And that's why you sit for few demo sessions so that you can find it out how the economics teacher is teaching to you, whether he'll be in a position to teach you or not.
or whatever may be the other subject. So I cannot say that this is a wrong decision. This is a purely rational economic decision. Taking this concept forward, आप सोचो, when you spend 10 rupees on something and you do not get the desired satisfaction by consuming that particular product, तो आपको क्या लगता है कि यार 10 रुपया वेस्ट हो गया, और 2-4 घंटे तक आपके दिमाग में वही बातें चलती है कि यार वड़ा पाव 10 रुपए का खाया, मजा नहीं आया. It means as a consumer you were expecting the level of satisfaction worth 10 rupees. But then when you did not get the satisfaction worth 10 rupees, you feel bad about it, और आपके दिमाग में वही बातें आती है कि भाई पैसा वेस्ट हो गया. On some other day you spend 10 rupees on vada pav, और इतना जंबो वड़ा पाव आपको मिला, एज ए स्टूडेंट आपका पेट भर गया एंड यू आर लार्जली सेटिस्फाइड, तो आप क्या बोलते हो कि मजा आ गया, और दोस्तों को भी बोलते हो कि जा 10 रुपए का वड़ा पाव खा, एकदम डिनर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिनर के भी पैसे बच जाएंगे. See, here it's not all about 10 rupees. Here it's not all about 10 rupees. Since as a consumer, as an individual, all of us, whether you or me or anybody else, we all are struggling with something called limited resource. And that's why we expect at least the money which we spend, so the worth of that should be equal to the satisfaction which we get when we consume that particular product. आप सोचो एज ए कंज्यूमर आपकी बिहेवियर क्या होती है. When you go to buy vegetables in the evening, एक सेलर ने बोला बटाटा 20 रुपीज पर केजी, और थोड़ी दूर पर कोई बटाटा 18 रुपीज पर केजी बेच रहा है. जैसे ही वो बात आपके कानों में आई ना, आप इसका बटाटा छोड़ देते हो और वहां पर देखने जाते हो. 2 रुपीज पर केजी का डिफरेंस, तुम खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? बट देन एज ए कंज्यूमर आपकी एक रैशनल बिहेवियर होती है कि आप जाते हो, पहले देखते हो कि भाई वहां बटाटा 18 रुपीज मिल रहा है, तो आई मीन कैसा है. Why? Because consumers are price sensitive. और ऐसा क्यों करते हो? Again, the same reason, resources with you are limited. My dear friends, in economics, it's not only all about resources, but then limited resources or the problems related to limited resource become the central problem of any economy. If somebody asks you what is the central problem being faced by any economy, remember the central problem being faced by any economy is not garibi, berozgari, महंगाई, but the central problem being faced by any economy is limited resources. And all these are consequence of these limited resources. In society, if there is hunger and starvation, the ultimate root cause of it can be limited resources. So overall, in economics, we always try that how these limited resources can be utilized, how optimum utilization of these limited resources can be done. As a consumer, you do. As a producer, also I do.
As a government also does the same thing. That whatever the resources they have, they always try to make an optimum utilization of that resource. See, remember, try to differentiate between optimum and maximum utilization of resource. There is a difference between optimum and maximum. I'll take you my example. I am also a resource for Unique Academy, human resource. So my director sir said that since you are being paid for 8 hours in a day, you should start at 8 o'clock and you should end at 4. 8 hours duration. बताओ 8 to 10 में जिस एनर्जी से लेक्चर लूंगा, हो सकता है 10 to 12 मैं उस एनर्जी से नहीं ले पाऊंगा, और अगर उसके बाद भी मुझे लेक्चर लेने के लिए बोला तो I'll completely fan down. This can be a maximum utilization of resource, but the same resource can be utilized in a very optimum manner. And sir can ask me, so you take a lecture from 8 to 10, then take a break for 3 to 4 years so that you can prepare for the next lecture today or tomorrow, and in the evening you can take 2 hours lecture, that each all for the day. That's what आप बताइए, जब मैं next lecture लूंगा on that day, I'll be with more energy or not? I'll be entertaining your queries, I mean, actively or not? So that's what is optimum utilization of resource. So as an individual in economics, since the resources are limited, since the resources are scarce, we always go for optimum utilization of resources. This optimum utilization of resource, I mean, may vary from individual to individual. That cannot be same for all of us. So the one concept which you should remember about economics is that economics is all about optimum utilization of, I mean, limited resources. Please write it down. These all basics I'll not be covering when I'll be starting the session. Understood? That's what this is. Don't consider it to be a demo session per se. Consider it to be a regular session, because this introductory part I may not be covering. Understood? So we'll take forward from where we'll be ending. We will be carrying forward. So economics is the study of optimum utilization of limited resources. Second important point. When resources are limited, don't write now, listen to me. I'll explain one point wise. Now tell me, what are the general human desires? Let's see. Today I am struggling with the basic needs. I got a job of 10,000 or 15,000. Now I am able to manage my basic needs. Tomorrow, when my basic needs are fulfilled, so I also think I'll have a desire that I should also celebrate a weekend, because I know my neighbors used to celebrate every weekend. ठीक है, I also started celebrating that. Till today I was using public transport, but then till today I was using public transport, but now I'll desire to have a two-wheeler.
I bought a two-wheeler. Again, my income increased. Then my desire increased also. And I'm thinking कि बारिश आ रही है, एक फोर-व्हीलर होता तो अच्छा होता. वो भी हो गया. फोर-व्हीलर के साथ एक ड्राइवर भी होता तो अच्छा होता. I mean, these wants are unlimited. You must have experienced at your homes also. When you'll be asking your parents, or you must have experienced that during your childhood days, there were many luxury goods which you are now consuming were not there. And one after another, you start purchasing. ये होता तो अच्छा होता, ठीक है, अच्छा हो गया. ये भी होता तो अच्छा होता, ठीक है, ये भी हो गया. ये भी हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता. You know, these are natural things. It means our wants are unlimited, endless. अगर आज तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या डांडी मार्च करके यहाँ पर आते हो ना, और तुम सोच रहे थे कि एक टू व्हीलर होता तो अच्छा होता, तो टू व्हीलर तक ही तुम लिमिट नहीं हो जाते हो. तुम्हारे जो अरमान है ना, चांद के पार चले जाते हैं. सो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा. समझ में आ रहा? तो यू ऑलवेज एस्पायर टू हैव वन और द अनदर. सिंपली आप लोग ने देखा होगा कि व्हेन यू आर लिविंग इन अ रेंटेड रूम, रेंटेड फ्लैट, तो सोचते होगे कि एक 1 BHK फ्लैट हो जाता तो बहुत अच्छा होता. 1 BHK हो गया, 2 BHK हो जाता तो अच्छा होता. 2 BHK भी हो गया, थोड़ा सा स्पेसियस होता तो बहुत अच्छा होता. I mean, you keep on, and that is not wrong from economics point of view. That is completely rational. So you can understand that at one hand, I'm talking about that resources are limited. On the other hand, I'm talking that your wants are unlimited. So how you can cope up with this? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि दिल की अरमा आंसू में बहे. उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना. अनलिमिटेड वांट्स कहां से आएंगे भाई? दो ही हमारे पास सॉल्यूशन है. कट आउट योर वांट्स और increase the resource base. And that's why when we cannot cut out our wants, that's why you are here and I'm here. अगर ऐसा होता तो तुम उसमें ही खुश रहते कि एक क्लर्क बन जाएंगे, बस ठीक है, काफी है. और मैं भी खुश होता कि जो भी है मेरे पास ना, गरीब आदमी हूं, ठीक है, रोजी रोटी चल रही है, दैट्स फाइन. बट हम लोग ऐसा नहीं होना चाहते हैं. इसलिए तुम भी यहां पर हो, मैं भी यहां पर हूं. एंड दैट्स व्हाई द यूनिक एकेडमी एग्जिस्ट हियर. Unique Academy, when it exists here, that is also for a purpose, wants to make profit. और मैंने बोल भी दिया खुले दिल से कि मैं यहां पर क्यों हूं. मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं पैसे के लिए. और तुम भी झूठ मत बोलना, तुम भी उसी के लिए हो. So what I'm trying to tell you कि देखो, we cannot cut out our wants. This is natural. What we struggle, what we do, that we always to increase the resource base. But even though we try to increase the resource base, wants कभी कम नहीं होते. हमेशा क्या होते हैं? तुम्हारे रिसोर्स बेस से अधिक ही होते हैं. तब तुम्हें क्या करनी पड़ती है? प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है. देखो मैं क्या यहां पर कहना चाह रहा हूं. इफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, staying in Pune,
So you must be getting salary every month. That salary नहीं देते हैं तुम्हें 10,000 या 8 to 10,000 on an average. अब बताओ 8 to 10,000 पे तुम लोग कैसे चलाते हो स्टूडेंट लाइफ में? मुझे पता है 3,000 खाने चले गए, 3,000 रेंट चला गया, बाकी क्या बचा 2,000. उसमें हर एक दिन चाय का लगेगा ही, मॉर्निंग इवनिंग, और उसमें तुम्हारे पार्ले जी एंड टाइगर बिस्किट. दैट्स व्हाट इज स्टूडेंट बिस्किट्स. ये मैंने भी एंजॉय किया. अब नाउ टेल मी, तुम क्या करते हो कि जब ब्रेकफास्ट लेने जाते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि यार एक अच्छा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता तो बहुत अच्छा होता यार, एक फुल साइज इडली डोसा या फिर साउथ इंडियन डिश या पराठा ऐसा कुछ होता तो बहुत अच्छा होता. लास्ट में तुमने इंस्पेक्शन सारा कुछ किया, बट यू एंड अप ओवर पोहे और नॉट. I mean, what is this? Simply, I mean, unlimited wants है, मन कर रहा है, मन यही नहीं कर रहा है. मैं उधर से आता हूं तो मुझे 10 सालों से मन करता है कि मैं JW मैरियट में जाकर ब्रेकफास्ट लूं, बट फिर पॉकेट देखता हूं तो गरीब आदमी हूं, कुछ नहीं है. What I am trying to tell you, wants रहते हैं, wants हमेशा रहेंगे, मन करेगा हमारा, बट हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमने पॉकेट देखा आपने, तो आपने क्या किया? प्रायोरिटाइज किया. चॉइसेस, पहली चॉइस क्या होगी तुम्हारी? पहली प्रायोरिटी क्या होगी? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर इफ यू गोइंग फॉर साउथ इंडियन डिश, 3 दिन सिर्फ चाय पीकर ही रहना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई यू टूक अ डिसीजन कि पोहे ठीक है यार, बहुत उसमें सब कुछ विटामिन है, प्रोटीन्स, फाइबर, सब कुछ है, मानकर चलते हुए जी स्टूडेंट पोहे खाओ. See, have you ever thought कि ये सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आप कभी कभी डे टू डे, आई मीन हर एक दिन आप सोचते हैं, बट आपको कभी पता नहीं था कि यार यही इकोनॉमिक्स है. So, coming over here, जो हमने अभी बात की, at one go it was limited resources, on the another it was unlimited wants. भाई अगर ऐसा है, so what we need to do, we need to make priorities or not? We need to make priorities, we need to make choices. अब बताइए, आपकी सैलरी आती है तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है? पृथ्वीराज, पहली प्रायोरिटी. हाँ, तुम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, कभी उस हिस्ट्री को देखना भी मत, आधे प्री में गलत करके आओगे. पहली प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होती है कि भाई मेस वाले को इतना हटा दो, रेंट वाले को इतना दे दो, और जो बाकी बचेगा वही तुम्हारा है. प्रायोरिटीज, चॉइसेस, वही लिमिटेड रिसोर्स. तो पहली प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होती है कि रेंट को दे दिया, फूड के लिए दे दिया, कुछ बुक्स खरीदने हैं, वो भी प्रायोरिटी में आती है कि वो लास्ट प्रायोरिटी होती है? नहीं. So depending upon individuals, you set your priorities, and that's what is nothing but economics. और ये जो प्रायोरिटीज डिसाइड करते हो ना, that is based on human behavior, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी सेम नहीं होगी. एक इंडिविजुअल की प्रायोरिटी, मान लीजिए कि इनकी प्रायोरिटी क्या होगी कि अगले मंथ एक नई मूवी आ रही है, फॉरगेट रेंट वाला, फॉरगेट खाने वाला, पहला दिन मूवी जाकर एंजॉय करना. शेरा या शमशेरा. अब उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है? वही
जानते हो क्यों इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है? बिकॉज ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर, ही वांट्स टू बिकम ए डायरेक्टर. उनके कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उनकी वही है, एंड दैट्स व्हाई फॉर हर फर्स्ट प्रायोरिटी कैन बी दैट. बट अगर आपके केस में मैं देखूं, I may not consider that to be your first priority because your economic or ultimate objective is different. So in economics, what you need to understand that there is at one hand limited resource, on the other there are unlimited wants. So as an individual, you need to prioritize, you need to make choices, and all these things are nothing but, and all these things depends upon human behavior. Remember, economics is also the study of human behavior, wherein an individual tries to manage his unlimited wants with limited resource. And how? By making priorities, by making choices. Those who have learned economics, पहले पढ़ा है, आपको समझ में आ रही है? आ रही है आपको? और जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, उनका क्या हाल है? उनको भी समझ में आ रही है, मैं मान सकता हूं? ठीक है. Now, moving forward, have you ever thought that your decisions at an individual level? So what can be the individual decisions? I'll tell you on the basis of this. Have you ever experienced a very good fight between, mom and dad? Good fight means, husband, Indian husband wife के बीच में कैसा fight होता है. आधे घंटे पहले fight हुआ और आधे घंटे के बाद ऐसा लगेगा कि दोनों भगवान ने उनकी जोड़ी कितनी अच्छी बनाई है. सो कभी तुमने इस तरह से देखा होगा कि एक लंबी लिस्ट तुम्हारी मॉम ने, होम मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर को दिया, और जैसे ही वो लंबी लिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर को मिला, उनके चेहरे देखो तो उनको समझ में आएगा. तो कभी कभी इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये खत्म हो गया क्या, ये ठीक है, ये पिछले मंथ आया था, अभी अगले मंथ नहीं हो सकता है क्या? फिर एक ऐसा आएगा कि ये तो इस मंथ हो ही नहीं सकता. उधर से थोड़ी सी आवाज आई होम मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर बोले अच्छा हो सकता है, हो सकता है. ऐसा क्यों? बेचारा वो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों इतना फंसा रहता है? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि रिसोर्स उसके पास क्या है, लिमिटेड है. और जब वो लंबी लिस्ट आती है ना, तो उसमें से वो क्या करता है, प्रायोरिटीज करता है कि ये ठीक है, बच्चों के एजुकेशन ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस ठीक है, क्या इस बार बाहर घूमना कोई जरूरी है क्या? क्योंकि ही नो कि वो पहली प्रायोरिटी नहीं हो सकती. या कभी कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि डैड ने प्रॉमिस किया था कि एक अच्छा न्यू स्मार्टफोन आपको देंगे, और आपको याद भी है कि इस पर्टिकुलर डेट को किया था, टाइम क्या है और कब पूरा करने के लिए भी किया था. आपने खटखटाया कि डैड दिस इज द राइट टाइम, आपने डेट दिया था. बेचारा वो डैड, रिच डैड, पुअर डैड. सो हैव यू एवर एक्सपीरियंस? क्या ऐसा लगता है कि डैड नहीं देना चाहते हैं? नहीं. जानते हो, अभी इंडियन सोसाइटी आज भी वैसा ही है कि नो पेरेंट्स वांट कि वो उनके बच्चों को बेस्ट ना दे. दे ऑल दो ट्राई विद देयर बेस्ट ऑफ पोटेंशियल, यार जो भी देना है दे दे. सिंपली they are not able because they struggle with something called limited resources. See the principles of economics there.
Again, giving you more insights. In the coming days, after 5 to 6 years, when you'll be getting married, so whether your marriage will be social decision or economic decision. मैं सोशलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन. तुम सोचो, देखो, डोंट बी सो मच इमोशनल अबाउट इट, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. आप बताओ, कोई अपने पार्टनर सिलेक्ट करोगे तो वॉट एवर मे बी दी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले तुम क्या बोलते हो, वो कितना अर्न करता है और कितनी अर्न करती. योर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी हो तुम, कैसे भी हो, विल बी डिफाइंड बाय हाउ मच मनी यू अर्न. ये गलत नहीं है यार, बी वेरी प्रैक्टिकल. जानते हो तुम, एज एन इंडिविजुअल, यू नो, यू अंडरस्टैंड कि शादी के पहले एक सैलरी, शादी के बाद 2 सैलरी, सो दैट यू कैन एंजॉय मोर कंफर्ट्स एंड लग्जरी. लड़का भी चाहता है लड़की भी वर्किंग हो, लड़की भी चाहती है कि लड़का मुझसे तो ज्यादा वर्किंग अर्निंग हो. बट आज ऐसा नहीं है. डोंट, आज द गर्ल्स हैव बिकम स्मार्ट. मैं हमेशा बोलता हूं कि आने वाले दिनों में बाप को ये सोचना पड़ेगा कि बेटे की शादी के लिए पैसे हैं कि नहीं. Hope so that day comes also. See, simply, आप बताओ, don't you think marriages today, I mean, involve lot of money? बताइए ना, कितना आपके डैड आपको बोला होगा, यार बेटे की पैसे के लिए अभी फंड जमा कर रहे हो. I mean, what is this? सोशल कहां से डिसीजन हो गया भाई? सोशल डिसीजन कहां से हुआ? नॉट ओनली नाउ, इवन इन अर्लियर डेज ऑल्सो. लड़का की प्रॉपर्टी क्या है? मेटेरियलिस्टिक. अब बताइए. सो इवन in the coming years, your marriage decisions will be economic decisions. I think this is all about an introduction about what economics is. Largely, the scope of economics covered too many things. Today, economics, you can classify it into 2 components called microeconomics, macroeconomics, that I'll be teaching you also. Then there are different other specialized version of economics. Please sit straight, all of you. Specialized versions of economics can be public finance, international economics, money and banking, growth and development. I mean, all these are different specialized versions of economics. Anyway, since you will not be taking optional, I mean, this you need not to study, but then you should understand the length and breadth of this particular subject. Subject is very dynamic, no doubt about it. Even today, I also feel that in this life, I may not be able to command the total of economics. The reasons are very simple. The way the subject is dynamic and the way it's expanding, it becomes very challenging for a teacher like me also, I mean, to catch each and every developments which take place each and every day. Today, there is a war between Ukraine and Russia. And all the impact of this becomes part of economics. Then you need to understand each and every developments over there. Today, Sri Lanka is in debt crisis. And then that, as a teacher, I need to study that also. Today, Pakistan has asked for help from IMF. And if IMF did not help Pakistan, that will also become an issue for discussion to you all. Tomorrow,
if something happens in one part of the globe and its repercussions are felt on India, as a student of economics, you need to understand that also. So such is the dynamism in this subject, and that's why as a student, when you are preparing for UPSC, you should also be on your toes as far as current developments are concerned. So a study of current issues becomes important when you are preparing for UPSC, and all the current developments related to economics will be taken up in the class. Let's say if there are something happens in the field of public finance, so whenever I am taking up public finance, I'll be taking up those current developments also. Or let's say in India, the rate of price rise has increased to a larger extent. So when I am teaching you inflation, I'll be also taking up the current developments related to price rise in our economy. Now, as a student, how you need to cope up with it? You must have been told that you need to read a newspaper. Trust me, reading newspaper should be important component of your overall strategy for preparation of economics. So how to go about it, I'll tell you. You must have been asked that you should be reading, either Indian Express or Hindu or Business Line or Economic Times, whatever it may be. At the start, go with Indian Express. So when you'll be reading Indian Express, initially what happened कि पढ़ते ही तुमको नींद आएगी. So bear with it, क्योंकि तुमको नहीं समझ में आएगा. But then read loudly, even though you do not understand. Take the help of Google, go through the meaning, and even after that you do not understand, please come to the class. After the class, please do ask me. At the initial stage, I'll be taking up certain topics related to concepts, because concept building in economics becomes primary importance to you all. So after 2 to 3 months, when I'll be able to complete the overall conceptual topics, so I'm damn sure you'll be in a better position to understand the economic terms or business terms and terminology which are there in the newspaper as well. So if any friend of yours has advised you कि न्यूज़पेपर जब एग्जाम हो तभी उसके 6 मंथ पहले पढ़ लेना, तो उसकी फिलॉसफी को तुम लोग फॉलो मत करना. I am again repeating, reading newspapers should be made part of your overall preparation, whatever time it may be consuming. Initially, when you'll be reading newspaper, that will consume a lot of time without any output and outcome. 2 घंटे स्ट्रगल के बाद तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद तुम सोचोगे कि मैंने क्या सीखा, तो तुमको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज डिस्करेजिंग. आई कैन अंडरस्टैंड. बट देखो, शुरुआत में इसको बेयर करना पड़ेगा. Don't be so much, don't take it, on a very negative note. आपको मैं बताऊं, मैंने तो आपको बोल दिया कि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग लेते आना और मैं समझा दूंगा. जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो कोई समझाने वाला भी नहीं था, और उसमें इस तरह के गूगल भी नहीं था कि जहां पर हम क्या करें ना, तुरंत नेट है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, तुरंत क्लिक करें एंड द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे पास देयर वाज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो. वी यूज्ड टू हंट
इन लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स के कहीं डिक्शनरी है क्या और उसमें वो जार्गन है क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट सक्सेसफुल. So that was the struggle. Today you have all the resources with you. Your answer is one click away. Even though you do not understand, then I told you, come in the class with that particular jargon, that particular terms, I'll make you understand. If you all will be consuming 2 hours in reading newspapers, and if you continue to read, take my words, in the next 6 months, the time consumed will be halved. और 6 महीने के बाद टाइम भी आधा हो जाएगा और तुमको नींद भी नहीं आएगी. Because now you have started understanding the concepts. So you please take this forward and read the newspaper, considering it to be important component of your overall preparation strategy. About magazines, Yojana, Kurukshetra, as of now, that's all. No other magazine for economics. So this is all about newspapers and magazines as far as GS paper 3 or economics section is concerned. Now in newspaper, what you need to do, or magazine when you will be reading, try to underline the important jargons or terms and terminology wherein you have understood or not understood. You can make a list also. So let's say in a week, while reading newspapers, you are coming across 10 jargons in a week. I'm considering the minimum. If you are coming across 10 jargons in a week and you do homework on it, you asked me, you search through Google. अगर मान लो उस 10 में से तुमने 5 भी समझा in a week, 5 jargons in a week, tell me in 1 month, इन 10 में से मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 jargon देखा, तुमने मेहनत भी किया, वर्कआउट किया, उसमें से मैं फिर भी मान रहा हूं कि तुम्हें 5 ही समझ में आया. इन ए मंथ कितने jargons होंगे? 20. In 12 months, 240. अगर 240 jargons तुमने इकोनॉमिक्स के समझ लिए तो आधी इकोनॉमिक्स मैं मान सकता हूं कि तुमने समझ लिया. See, you need not to do anything extraordinary. I always say in economics, your serious ordinary efforts also can give extraordinary results. तुम्हें कुछ ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ाई करनी है. तुम एक बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी की तहत तुम तैयारी शुरू करो. Prepare the way you used to prepare in your board, before your board exams. और तुम देखो the results will be totally positive. Simple thing is that be honest to yourself. Most of the times when you are staying together, तो तुम्हारे रूममेट्स में कंपटीशन होगी कि वो 12 घंटा पढ़ा, वो 14 घंटा पढ़ा, और तुम उसको कॉम्पीट करके तुम्हें बहुत जोरों की नींद आ रही है, बट उसको कॉम्पीट करने के लिए बुक लिए हुए हो, नींद आ रही है, बट मन को सांत्वना देने के लिए तुम ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं. आप समझो उसका
बॉडी की कैपेबिलिटी और आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी क्या है, डिफरेंट है। आपके थॉट अप्रोच, उनके थॉट अप्रोच, उनकी एनालिटिकल स्किल, आपकी एनालिटिकल स्किल क्या है, डिफरेंट है। डोंट कंपेयर विद हिम और हर, कंपेयर विद योरसेल्फ कि कल मैंने क्या तैयारी किया, मॉर्निंग में मैं कहां तक था, बाय इवनिंग व्हेन आई एम गोइंग टू बेड हमने कितना वैल्यू एडिशन किया, और इस तरह से मैं अगर वैल्यू एडिशन करूंगा, सो वेदर आई विल बी एबल टू complete the syllabus in 1 year or 2 year or whatever may be the number of years. These should be your independent decisions. So never copy, never compare yourself with your friends. Compare you from what you are in the morning, and by the time you need to introspect yourself, that whether there is a value addition by evening or by night when you are going to bed or not. मैं तुमसे बता दूं, this is the truth and reality, that when you have worked harder for the day, when you'll be going to bed now, so you'll be getting a very, I mean, a different kind of satisfaction. Do you know the reason? The reason is simply that you have completely utilized that day to the fullest extent. और जिस दिन तुम्हारा दिन पूरी तरह से तुमने तैयारी नहीं की, तो देखो when you'll be going to bed ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं you will feel restless कि यार दिन बर्बाद हो गया। और I'll tell you कि जिस दिन तुम खूब मेहनत करके सोओगे ना, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। Number 2, when you are studying, though these are very simple, but then you must have, most of the time you do not follow. Try to use chair and table while studying. Don't study on the bed. तो बेड पर स्टडी करने का क्या होता है कि तुम शुरुआत इस तरह से किए, समझ में आ रहा है, फिर यहाँ पर पिलो आता है, फिर यू लाई डाउन, और फिर क्या हुआ कि कब क्या हुई पता नहीं चला। गुड मॉर्निंग। इसीलिए ट्राई टू बी यूज, देखो इट्स नॉट ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू आर गिविंग इन ओवरऑल प्रिपरेशन, आपने हर एक टाइम की प्रोडक्टिविटी कितनी यूटिलाइज की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर कंसिस्टेंसी matters. So when you are studying, it should be in such a way that 2 घंटे तुमने अगर seriously पढ़ाई किया ना, trust me, really you have make a honest efforts for 2 hours, 2 घंटे के बाद तुम बैठ नहीं पाओगे, you will completely get exhausted। और फिर तुम लोग बोलते हो कि मैं तो 16 hours पढ़ाई कर लिया। Don't have this। 2 घंटे पढ़ना है ना, but 2 घंटे ऐसे पढ़ना है कि that is equivalent to 20 hours of study। Second important point which I am telling you, when you'll be studying economics, always write a notebook with you, keep a notebook with you, keep a pen with you. There are many important points in the books which you'll be studying, in the notes which you'll be studying. Try to write that. That will increase your writing skills. To have the habit of writing. So reading and writing, subsequently at the same time, is what will be the best strategy in understanding economics. Next important point which you need to consider is the selection of books. If you will be attending the lectures here, so at the initial stage, you should follow NCERT books of 11th and 12th. No other books, no other notes. Again, I am telling you, मैंने आपको न्यूज़पेपर बताया, मैंने आपको मैगजीन्स बताया, फिर मैं बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली
NCERT book, 11th and 12th class, 11th and 12th class, that's all. Besides this, I'll be giving you class notes. You will be getting study material over here. Understood? Apart from it, I'll be discussing budget. I'll be giving you notes on that also. I'll be giving you notes on economic survey. So that will be more than enough for you when you'll be attending the lectures. There is no need also that you'll be taking up any reference book. The only condition is that you need to follow what I told you. Or else, after 2 years, you will come to me, sir, श्री राम नोट्स पढ़ लूं क्या? तो मैं बोलूंगा कि तुम अब श्री राम जय राम पढ़ो या हरे राम पढ़ो, कुछ भी नहीं होने वाला. So, what I'm trying to tell you is that कि ये मैं जो बोल रहा हूं ना, that is the complete package for understanding this subject and developing a good writing skill also. So, newspapers, magazines, books, reference book, as of now, you do not require. Reasons are, I mean, if you require reference book, then what is the relevance in attending lectures? So all the notes I'll be dictating also in the class, wherever I'll feel, I mean, concepts important, I'll be simply dictating to you also, and you need to write. Whenever we'll be coming to attend economics class, you need to bring a separate notebook for economics. Whatever A, B, C of economics I'll be teaching you, you need to note in that particular notebook only. And at any point of time, I may check also, and need to bring each and every day. At no point of time I want to see that you are saying कि सर यहाँ पर मैं रफ करता हूँ, फिर जाकर घर पर ये करता हूँ, तुम्हें इतना टाइम नहीं है. You need to study other subjects as well. The next set is what will be covering under prelims and how the question has been asked in the last 2 to 3 years. The topics which will be covering exclusively for prelims, please write it down. Certain few topics on microeconomics. Write down. Few topics on microeconomics. National income. Next, national income. Where is your notebook? Why are you writing on that? Write on the proper notebook now. Or if you have not brought, next time with that you bring it. National income. National income. Next, inflation. Inflation. Next, money and banking. Next, public finance. Next, financial markets. Financial markets. Within bracket, write down money market and capital market. Write down points wise. Money market and capital market. Next, foreign exchange market and balance of payment. Foreign exchange market. Foreign exchange market. And balance of payment. Next, union budget.
Union Budget / Economic Survey. Economic Survey. Next, we'll be taking up current issues or developments. All these will be part of your, conceptual understanding, which will be largely, based on your prelims exam. Understood? Prelims exam. So for when you are preparing for prelims, you need to give larger importance to these particular topics. Now, when you will be taking up, Vaibhavi, I told you na, Yojana and Kurukshetra. That's what, as of now. आप योजना ही पढ़ो, more than enough. मैगजीन्स के बारे में मैंने बताया ना आपको. Now, what are the subject matter of mains which you need to study? Planning in India. Growth and strategy. Inclusive growth strategy. Resource mobilization. Investment model, investment and infrastructure. Investment, infrastructure. Then agriculture and related issues. And related issues. This will cover many factors. This is crops and cropping pattern, supply chain management, food. Next, write down food processing sector. Food processing sector. Then write down international institutions. International institutions. Under international institutions, we'll be studying IMF, World Bank, WTO. IMF, World Bank, WTO. Then next write down poverty and unemployment. Poverty and unemployment. And last write down different economic reforms. Different economic reforms announced by the government. Reforms being announced by the government. See, all these will be, covering. If anything I have missed out, that also definitely while teaching you that I'll be taking up. Apart from it, discussing the questions which have been asked both in the prelims and the mains, that also will be discussed to you all. Now, if you see the questions which are being asked in the last few years,
You will be surprised that these years, the way questions were asked in prelims exam, I think those were comparatively difficult for the students. So difficulty level as far as economic section is concerned, I mean, has gone up as when and how you can experience by seeing the prelims question of this year. The thing is not whatever has been asked this year was not taught, it was taught. But simply the thing is that students do not give importance to certain section which they think that is of no importance. So in public finance, if there were certain questions on public debt related to inflation indexed bonds, related to dated securities, you can see check the audio lectures of last batch wherein I have taught them, and you can see in public debt, whatever the questions have been asked, I have dictated them in the class in the form of notes. You can check it. I mean, I'm not saying that I'm praising myself कि नहीं ऐसा वैसा. I'm not saying this. आजकल तो आपको ऑडियो लेक्चर्स मिलते हैं ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है. You can go and check there that whether those topics were covered or not. The characteristics and features of dated securities and inflation index bonds was dictated by me. And initially I told you, I'll be dictating certain notes. And I'll be telling you that also. But then also, there are few topics like bonds and all, wherein those were not discussed in detail. Because as far as seeing the existing trend, I have never thought that the UPSC will go into such detail as far as bonds are concerned. But this time, I'll be widening the coverage also so that we cannot take a chance. So this time, I'll be taking a bond market also on a detailed note, making you understand the concept so that, I mean, even though questions asked from there, you are in a position to solve. So this is all about prelims question. Prelims questions जो आते हैं, जो मैंने पहले topic आपको बोला. So the questions are from those topics only. Remember, while doing preparation, focus on 90% of the things which can be asked. Don't focus on 10% of the things which are not often asked. Understood? That's what should be the best strategy. बहुत बार क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रहती है, कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं और आप उसमें ही अपनी 90% ऑफ द एनर्जी डिवोट कर देते हो. सी, ये क्या है हमें, आई एम नॉट हियर टू मेक यू ए स्कॉलर. I am here to make anyway, cross that mark so that you can clear pre-mains and finally you can get into merit list. मैं जानता हूं कि मैं आपको 8 महीने में 10 महीने में इकोनॉमिक्स का स्कॉलर नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकता. So there should be certain strategy. इसीलिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, considering there are only, there are only few questions in few years have been asked, 1 or 2 questions few years have been asked. So I mean, don't try to invest your 90% of the energy or time onto it, because that will take away, I mean, larger part of your time where you could have invested in topics where there is a 90% probability. So that's what your strategy should be. As far as mains are concerned, GS paper 3 is concerned, most of the time, the students all over India, I'm talking about, they always have a complaint, sir, GS paper 3 mein marks kam aate. This is reality.
जानते हो क्यों आते हैं? कि the way in the last 5 years questions are asked, even though I do not teach you now, you can write something or the other in those questions. But अगर बताओ कि since that is a GS3 paper and that has economic section, economics meaning attached to it, so if you do not answer in that length and breadth, you will not be getting good marks. एक जनरल आंसर लिखोगे ना तो सब लोग कुछ, अगर मैं बोलूं कि आज आप पॉवर्टी के बारे में लिखना है तो आप लोग सब कुछ लिख सकते हो थोड़े बहुत. एक आंसर वैसा चाहिए जो कि पॉवर्टी के लेंथ ब्रेथ को डिफाइन करता है, एंड दैट आंसर लुक्स वेरी मैच्योर्ड and can be differentiated from the rest, which has economics meaning attached to it. उस आंसर को देखने से ही लगता है कि you know the economics on this subject, so definitely in that case you will be getting advantage over the rest of the students, and only those students could get good marks. So if you want to score good marks in JS paper 3, रट्टा मारने से नहीं आएगा. You need to have conceptual clarity. You need to have conceptual clarity, then only you can write good answers. समझना कि देखो, there are two variables A and B. If A leads to B, तो हमेशा जो आंसर होगा इसी फैशन में लिखना होगा कि B is the outcome of A and not vice versa. अगर तुम भाजी मार्केट में गए, एक मैं सिचुएशन दे रहा हूं, देखो इकोनॉमिक्स का सेंस कहां प्रिवेल करता है. आप बताओ, भाजी की प्राइस डिटरमाइन करती है कि 500 रुपए में कितना भाजी मिलेगा, कि 500 रुपया डिटरमाइन करता है कि तुम्हें कितना भाजी मिलेगा. भाजी की प्राइस. So when you are writing answers, since that is a vegetable market, that is not a money market where money will decide how much you will buy. In real sense, there price of vegetable will decide कि 500 रुपए में तुम्हें कितना मिलेगा. देखो, अगर if you do not understand this concept, तो तुम क्या लिखोगे कि 500 रुपए में मुझे इतना केजी भाजी मिला. That's true. बट क्यों मिला? इसलिए मिला कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल दैट डे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाज दैट मच, एंड दैट्स व्हाई you could get only that quantity of vegetable. So that's what, the way you are interpreting, the way you are writing, that's what makes your answer matured. दूसरा, देखिए इकोनॉमिक्स है तो डेटा का यूज इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैं बोलूं सी इज नॉट ए गुड गर्ल, अगर मैं बोलूं, कहां थे तुम, अगर मैं बोलूं कि सी इज नॉट ए गुड गर्ल, तो तुम लोग क्या बोलोगे? इसके दोस्त सर डोंट मेक ओपिनियन. आपके पास कोई डेटा क्या है जस्टिफिकेशन के लिए? आप बोलोगे ना. अगर तुमने कोई गुनाह किया है तो पुलिस क्या करती है? एविडेंस मांगती है कि नहीं? यहां पर भी वही है. समझ में आ रहा? तुमने अगर कोई गुनाह किया है, क्राइम किया है, तो और अगर तुम उसको जस्टिफाई करना चाहते हो, यू नीड टू हैव एनफ एविडेंस टू इट. नहीं तो अगर ये बोलती है कि मैंने 50 मर्डर किए एंड आई एम बॉस, मैं बोलूंगा कि ठीक है मैडम, आप बॉस हैं, बट आपके पास क्या सबूत है कि आपने 50 मर्डर किए? तो वो बताएगी कि आप जाकर पुलिस स्टेशन में चेक कर लो, मेरे नाम से 307, 302, 306 सेक्शन लगे हुए हैं, मैं प्रिजन छोड़कर भाग कर आई हूँ. तो देयर इज अ जस्टिफिकेशन टू इट और नॉट. अगर मान लो कि तुम किसी भी चीज को ये कर रहे हो, अगर तुम बोल रहे हो कि इन इंडिया पॉवर्टी इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैव reduced, gone down. तो अगर मान लो by the use of data I am not justifying this statement, तो simply I am making opinion. याद रखना, इकोनॉमिक्स में ओपिनियन नहीं चलता. जानते हो ओपिनियन कौन देता है?
आप गांव में देखे हो या ट्रेंड में देखते हो ना, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मोदी जी बहुत गलत काम कर रहे हैं। महंगाई जो बढ़ रही है ना, वो मोदी जी की ही देन है। अजीब ओपिनियन नहीं देते हैं ना। ट्रेन में तुम जाओ ना, एक इंडिविजुअल ने कभी क्रिकेट नहीं खेला है और इतना बड़ा ज्ञान देगा क्रिकेट में, विराट कोहली के तो ऐसे खेलना चाहिए था। भैया तुम कभी बैट पकड़े क्या, साइज क्या होती है, उसकी लेंथ ब्रेथ क्या होती है, तुम इस तरह से ज्ञान कैसे दे सकते हो? ओपिनियन, इंडिया में ओपिनियन देने वाले अधिक होते हैं। 2 दिन तक तुम दिल देखोगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अनस्टेबल गवर्नमेंट की कोशिश हो रही है ना, तुम जाकर चौक चौराहों पर जाओ और चाय पीने वाले को देखो। आई मीन इस तरह से उद्धव ठाकरे जी का ये करेंगे ना, या शरद पवार जी का, या देवेंद्र फडणवीस जी का, कि लगेगा कि दे आर ग्रेट स्टेट्समैन। इतना ओपिनियन, इकोनॉमिक्स में ओपिनियन नहीं चलता। अगर ओपिनियन दे रहे हो उसको क्या करो, जस्टिफाई करो। और जस्टिफिकेशंस के लिए क्या करते हैं, हम डेटा का यूज करते हैं। अंडरस्टूड अजय? डेटा का यूज। हाँ, अब तुम पूछोगे कि सर इतना डेटा कैसे याद करना है? नहीं, इतना डेटा आपको नहीं याद करना है। देयर आर सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे इन्फ्लेशन हुआ, फिस्कल डेफिसिट हुआ, समझ में आ रहा? आपको करेंट अकाउंट डेफिसिट्स हुआ, फॉरेक्स रिजर्व्स हुआ, पॉवर्टी हुआ। आई मीन कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जिनके डेटा कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको याद करना होगा। जैसे मुझे पता होना चाहिए एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, कि 1950 में हमारी जीडीपी क्या थी, पर कैपिटा इनकम क्या थी, क्योंकि दैट वाज द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर मुझे पता होना चाहिए कि 1991 में क्या था, व्हेन आवर इकोनॉमी लिबरलाइज्ड। आज क्या है, आज क्या है, समझ में आ रहा? सो एटलीस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड्स के डेटा हमें याद होना चाहिए, सो दैट कि व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स ना, यू कैन फाइंड इट आउट कि वेदर वी आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन. And that's what will be the best way where you can, I mean, counter a statement which is given in the question, or you can prove your statement. Is it fine, all of you? Are you in line with me, all of you? Next important point is that the way questions will be asked in mains, you will always find that your shortage of time. So when you find yourself in such a situation that when you are having shortage of time, so what is the best way to represent? The best way to represent is diagrams, graphical representation. So making diagrams, graphical representations becomes one of the key attribute of your answer writing. So simply क्या होता है कि 10 sentence जो तुम लिख पाते, which would have taken 10 minutes of yours, by making simple diagrams, I mean, that could have been explained in 2 to 3 minutes. So that is one of the way to increase your speed, improve your writing skills. When you will be going through newspapers, articles, later on, you will start making notes also, but as of now, no need, because I mean, as of now, you will not be in a position to understand. So when you start understanding the articles, so definitely you can start working on making notes based on those current topics as well. देखो क्या होता है, एक बार आपने पढ़ा उसको, दूसरी बार पढ़ा होगा आपने, तब आपको समझ में आई, फिर आपने गूगल सर्च किया उस टॉपिक के रिलेटेड, वहां पर कुछ जार्गन्स आपने ऑब्जर्व किए, फिर आप समझे, फिर आपने उसको लिखा, तो बताओ, there is a larger chance that you can recall about the contents in the examination or not. So इसलिए writing becomes very, very important.
और आप लोग हमेशा लिखने की आदत डालिए। लिखने का ऐसा मतलब नहीं होता है कि आप लोग एक दिन मुहूर्त निकालेंगे कि ये अब पढ़ाई हो गई रीडिंग, एक दिन ऐसा आएगा जब हम लिखना शुरू करेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा? और फिर तुम बोलोगे कि सर इस बार तो मैं राइटिंग स्किल डेवलप करूंगा। दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द पैकेज। द पार्ट ऑफ द पैकेज शुड बी, जो मैंने बोला कि विल बी ब्रिंगिंग योर इकोनॉमिक्स नोटबुक और डायरेक्टली लिखना शुरू करो। समझ में रहा? सिंपली क्या मैटर करेगा कि देखो तुम राइटिंग स्किल की इंप्रूव करने के लिए बेस्ट स्टडी जानते हो क्या है? essay writing, or the best strategy of improve writing skill is to write. See, ये सब याद रखना तुम लोग। क्यों मैं बता रहा हूं? देखो, your writing skill completely I cannot change it. हाँ, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन मैं कर सकता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ रहता तो अच्छा रहता, ये प्रेजेंटेशन से यहाँ रहता तो अच्छा रहता। याद रखो, इतना कम टाइम रहते हैं तुम्हें, जब मेंस के आंसर लिखोगे तो इन चीजों के ऊपर तुम ध्यान नहीं, बहुत ज्यादा नहीं देख पाओगे, और तुमको लास्ट में लगेगा कि यार मेरे आंसर्स के प्रेजेंटेशंस तो बहुत अच्छे नहीं है। क्यों? जानते हो, तुमने बहुत अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया। If you will be practicing too much now, automatically you yourself will develop that presentation skills, or in the examination, even though you get less time, आप डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में लिख पाओगे। आपको कुछ एडिशनल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने बहुत लिखा। एंड दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम डे वन। सिंपल, ऑन सिंपल टॉपिक्स आई विल टेल यू। कैसे तुम अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करोगे कि अगर मान लो कि तुमने छोटा मोटा, तुम्हें कहीं दिमाग से बातें आ रही है ना कि भाई देयर इज पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन महाराष्ट्र, और तुमको गवर्नर के यहाँ पावर पर कंप्लीटली ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन वेयर इन एक फैक्शन शिवसेना का बोलता है कि मैं बड़ा, दूसरा फैक्शन बोलता है मैं बड़ा। अब तुमको डिसाइड करना है कौन बड़ा। तो विल बी रेफरिंग टू सुभाष कश्यप, you will be referring to DD Basu, you will be referring to different magazines कि भाई गवर्नेंस के रोल क्या होते हैं, what are the articles of the constitution, और इसमें what can be the procedure for the next government formation। सिंपली इस चीजों को तुमने कहीं पढ़ा, आज ही तुमने देखा, घर रात में गए और तुमने सोचा कि भाई एक जो करेंट डेवलपमेंट्स हो रहा है इन पॉलिटिकल सर्कल इन महाराष्ट्र, what are the different articles of the constitution attached to it। तुमने सिंपली एक पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। What are the powers of the governance related to it? सिंपली उसको लिखना शुरू किया। This way slowly, gradually you will be developing the art of writing, and at the same time, over a period of time, you will be developing this current event as well। कल तक आपको पता है कि इसमें क्या क्या circumstances हो सकते हैं, and that's what is required by UPSC, whether you are able to update on day-to-day basis or not। Is it fine, मेरे दोस्त? तुम लोग समझ रहे हो ना? Taking you forward, the relevance of economics. As far as this subject is concerned, if you are able to command this particular subject, trust me, this subject will help not only in GS paper 3, this subject will help in other general studies subjects also. If you are opting political science or public administration as an optional, this subject has larger relevance. In political science, you will be taking up international relations, and international relations, geopolitics is nothing but geoeconomics। आज रशिया चाइना में, रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है उसके इकोनॉमिक सीक्वेंसेस है। This will help you in a good writing, writing essay. This will help you in writing papers of social issues like poverty, unemployment, and other issues. And at the same time, I'll tell you, this will help you in your interview also,
Because when you know the economics, I'll tell you, below average people or average people, largely they discuss politics and they limit themselves to there only. But the average or above average, along with politics, they start discussing economics. Understood? तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब आप आंसर्स लिखते हैं और इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा नॉलेज है आपको, आप कोई भी आंसर को थोड़ा सा इकोनॉमिक अप्रोच भी दे रहे हैं, तो योर आंसर विल बी कंप्लीटली अ डिफरेंशिएटर. So what did we discuss today? Number one, I discussed with you, I give you the insights on economics. Second part, I discussed with you what you need to study and what you need not to study. Third, I also discussed the syllabus part for both prelims and mains. And one important thing also I taught you, I discussed with you what study material, what books you will be referring. Now expanding the syllabus of prelims, how will be going in the class, that's what also I need to discuss. The first thing, in the next class when you will be meeting, I'll be taking up something called microeconomics, as I told you. Under microeconomics, I'll be teaching you the characteristics or the subject matter related to microeconomics. What is the difference between micro and macro? I'll be studying you individual demand, demand curve, elasticity of demand. I'll be teaching you supply curve. I'll be teaching you cost, explicit cost, economic cost, implicit cost, opportunity cost, private cost, social cost, all these different type of cost I'll be taking up. Then going forward, I'll also be taking up different types of markets on the basis of nature of competition. What do you mean by perfect competition? What do you mean by monopoly? What do you mean by monopolistic? What do you mean by oligopoly? What do you mean by duopoly? What do you mean by monopsony? That's what we'll be taking up. This I'll be covering up under microeconomics. Now, when I'll be covering up these particular topics under microeconomics, so since in pre, there are not so many questions from microeconomics, hardly 1 or 2 question comes. So you need not to refer all the part of the whole book of NCERT microeconomics, no need. Whatever topics I'll be teaching you in the class, you need to refer to those topics from NCERT microeconomics books, that's all. No need to refer the whole NCERT microeconomics book. फिर से मैं बता रहा हूं, जो टॉपिक मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास में पढ़ाऊंगा, मैं उसका नोट्स भी आपको दूंगा क्लास में. आपको रिवीजन के लिए सिर्फ वही टॉपिक एनसीईआरटी के माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक से क्या करने हैं, पढ़ने हैं. गोइंग फॉरवर्ड, वंस I'll be covering microeconomics, then I'll be making you understand what do you mean by macroeconomics. What do you mean by national income? What do you mean by GDP? What do you mean by GNP? What do you mean by factor cost? What do you mean by market price? What is the relation between factor cost and market price? What do you mean by gross value added? What do you mean by what is the relation between factor cost and market price? What is the old methodology of calculating national income? What is the new methodology of calculating national income? What is the relevance of GDP as far as determining economic welfare of a country is concerned? Why India's GDP is, what do you mean when India's GDP is contracting or expanding? What do you mean by nominal GDP? What do you mean by real GDP? What do you mean by GDP deflator? What are the different methodology of calculating national income? What do you mean by income method? What do you mean by output method? What do you mean by product method?
What do you mean by expenditure method? And all these methodology also I'll be taking up, under national income. Apart from it, we'll also be talking about the difference between what do you mean by growth. When we say economic growth, what do you mean by it? What is the difference between growth and development? Why we say growth to be quantitative analysis and why we say development to be qualitative analysis? What do you mean by human development index? What are the parameters which we consider in determining human development index? What is the India's latest ranking in human development index? Why India is lagging behind in human development index? All these things will be considering as a part of national income. मैंने एक ही वर्ड national income में लिखाया था, इतना ही नहीं है. Next, coming to inflation, I'll be teaching you the meaning of inflation. I'll be taking up different types of inflation. Demand, what do you mean by demand pull inflation? What do you mean by cost push or supply side inflation? What are the different forms of inflation? What do you mean by disinflation? What do you mean by deflation? What do you mean by creeping inflation? What do you mean by hyperinflation? What do you mean by reflation? What do you mean by stagflation? What do you mean by Philip curve? All these things will be studying. Then I'll also be taking up how do we measure inflation in India? What do you mean by wholesale price index? What do you mean by consumer price index? How index is being calculated? What is the last year's formula? What are the impacts of inflation? What are the impact of inflation on Garib Aadmi like me? What are the impact of inflation on high net worth individuals like you? What are the impact of inflation on creditors? What are the impact of inflation on debtors? What are the impact of inflation on exports, foreign exchange market? How we can, what are the anti-inflationary measures, which we can take in order to control inflation? All these things will be taken up under inflation. Under money and banking, we'll be taking up the meaning of money. What are the different forms of money? What are the different functions of money? What are the demand for money? What is transaction demand? What is precautionary demand? What is speculative demand? What do you mean by liquidity trap? All these things will be covered under demand for money. Then we'll be also be studying supply of money. Under supply of money, we'll be talking about reserve money, high-powered money. We'll be talking about M0, M1, M2, M3, M4, NM1, NM2, L1, L2, L3. That's what these are different forms of monetary and liquidity aggregates. Don't worry, मैं सिखाऊंगा. सिर्फ मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ so that you will have कि सर ने ऐसा बोला था, हम लोग इस तरह से सीखेंगे. और that's the reason why I'm telling you that you can well understand the length and breadth of each of the topics which I have asked you to, which I have dictated you as part of pre and mains. तुमको लगा था कि एक छोटा सा टॉपिक है, ऐसा नहीं. Then I'll be taking up in money and banking also. I'll be taking up the role of RBI. What do you mean by monetary policy? What are the different monetary tools? What do you mean by repo? What do you mean by reverse repo? What do you mean by marginal standing facility? What do you mean by open market operations? What do you mean by SLR? All these things will be taking up. Then in public finance, I'll be taking up, overall, the meaning of public finance, revenue management, expenditure management, deficit, debt, different type of deficits we'll be studying. We'll be studying the revenue deficits. We'll be talking about budgetary deficits. We'll be talking about fiscal deficits. We'll be talking about effective revenue deficits. We'll be talking about monetized deficits. We'll be talking about primary deficits. All these deficits will be talking about, and different components of budget like revenue account, capital account. Understood? All these things will be taking up. We'll also, apart from it, we'll also be taking up public debt. Public debt. आज देख रहे हो कि नहीं, different जो तुम्हारे countries है around India, आज हम बोलते हैं ना कि India is not surrounded by oceans, but India is surrounded by debt trap nations. आपको लगता है ना पाकिस्तान प्रॉब्लम में है कि नहीं, श्रीलंका प्रॉब्लम में है कि नहीं, मालदीव प्रॉब्लम है कि नहीं, नेपाल भी कुछ दिनों पहले प्रॉब्लम था कि नहीं. That's why on that basis we can say na India is not only surrounded by oceans, but it is surrounded by debt trap nations.
You see, so we need to understand what do you mean by public debt, what do you mean by internal debt, what do you mean by external debt, what do you mean by marketable securities, what do you mean by non-marketable, what are the central government liabilities, what are, I mean, other liabilities for the government, what are the external debt for the country, whether the external debt of the country is manageable or sustainable or not. So we need to study. आपको समझ में आ रहा है ना? सिर्फ इतना ही समझ लो कि कितना समझना है तुम्हें. That's what is the reality. अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं इतना ही समझा रहा हूं कि तुम्हें कितना समझना है. Once we are done with public finance, in between I'll be taking up current events, current issues pertaining to economics. Understood? So whenever, I mean, any development which I'll find that this is, I mean, important for my students, to definitely I'll be taking up in the class. Once public finance is done, then we'll be taking up, I mean, financial markets, money market क्या होता है, different instruments, money market के क्या होते हैं, commercial paper क्या होते हैं, certificates of deposits क्या होते हैं, treasury bills क्या होते हैं, money market mutual funds क्या होते हैं, collateralized lending and borrowing obligations क्या होते हैं, non convertible debentures क्या होते हैं, call rates क्या होते हैं, notice money क्या होते हैं, call money क्या होते हैं. All these are important instruments of money market. Once we are done that, then we'll be taking up, I mean, capital market. Under capital market, we'll be taking up primary market and secondary market. Secondary market is nothing but a stock market. Understand? Under primary market, we'll be studying up कि IPO क्या है भाई, initial public offer. अभी LIC ने शुरू किया कि नहीं, और देखो जिसने इन्वेस्ट किया आज रो रहे कि नहीं. I mean, they bought at around 900 and the prices have slashed to nearby 600 to 700. Hold it. अगर तुमने खरीदा होगा तो hold it for a while, that will give you certain profit, but you need to hold it for next 6 to 8 months. So IPO क्या होता है, initial public offer क्या होता है, follow on public offer क्या होता है, bonus issue क्या होता है, right issue क्या होता है, private placements क्या होता है. All these will become part of your primary market. Secondary market में stock market क्या होता है, BSE क्या होता है, NSE क्या होता है, Sensex क्या होता है, Nifty क्या होता है, BSE 30 क्या होता है, Dulux क्या होता है, I mean, insider trading क्या होता है, buyback shares क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, बुल क्या होता है, बेयर क्या होता है, ये सब चीजें सिखाऊंगा. और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ देखते हैं कि नहीं, एक्सचेंज रेट, हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है, तो एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, समझ में आ रहा. एप्रिसिएशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आई मीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स क्या होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है, पेग क्या होता है, स्नेक इन ए टनल क्या होता है, आई मीन ऑल दीज थिंग, हाइब्रिड क्या होता है, आई मीन मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है, ये सब सारी चीज सीखेंगे. उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, समझ में आ रहा. फिर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में सीखेंगे कि करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, समझ में आ रहा, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होता है, एंड और ट्रांजैक्शंस विद आईएमएफ कैसे होते हैं. तो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच विल बी स्टडिंग. मैंने फ्यू ही बोला अभी. नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या बोला प्री में, यस दैट्स व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऐप को यूनियन बजट आएगी. बाय द टाइम अगर मैंने पब्लिक फाइनेंस पढ़ा दिया होगा तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता चल गया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक आई विल बी टेकिंग अप यूनियन बजट. समझ में आ रहा. अब यूनियन बजट नेक्स्ट वीक मैं इसलिए लूंगा कि जो लोग, इफ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स, आई मीन इफ यू विल बी अपीयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स यूपीएससी, so definitely I mean union budget becomes one of the important component, and that I'll be taking up. Apart from it, economic survey is a bulky one, or I mean at times most of my students say that, sir, I mean going through economic survey is very time consuming. So what I do, I make a summary of economic survey and that will be circulated to you. So I'll be discussing in the class also economic survey and the topics related to it.
and thereafter I'll be giving you a summarized note of economic survey also, so that your time consumption gets reduced. So this is all about prelims. मेंस में जो टॉपिक मैंने बताया कि मेंस में क्या क्या टॉपिक मुझे लेना है, तो पहले मैंने बोला कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इन इंडिया। तो आपको पता है कि द प्लानिंग स्टार्टेड आई मीन लॉन्ग बैक फ्रॉम, अगर देखें फॉर्मल लेवल 1935 समझ में आ रहा, फिर 1950s में हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान शुरू हुए। you need to understand also कि planning commission was set up under what circumstances, why there was a need for planning after independence, what do you mean by planning in a market based economy, what do you mean by planning in a mixed economic setup, understood? What are the different types of planning, what do you mean by induced planning, what do you mean by imperative planning, what do you mean by indicative planning, what do you mean by centralized planning, what do you mean by decentralized planning, what do you mean by rollout plan, what do you mean by fixed plan? All these are different types of plans and planning which in India we have followed. Is it fine? Apart from it, we'll be talking about resource mobilization. आज बताइए किसी भी कंट्री के लिए mobilization of resource becomes important or not? कि A to Z, each and everything depends upon resource or not. So as a country की growth and development बढ़ाना है तो resource mobilization becomes important. तो कहाँ से resource लेकर आएंगे भाई? टैक्स से, नॉन टैक्स से, डिसइन्वेस्टमेंट से, घर के अंदर से, नहीं तो बाहर से बोरो करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। I mean, what are the different forms of resource? Water as a resource, land as a resource, I mean, for financial, for finance as a resource, minerals as a resource. So when you talk about resource in economics, सिर्फ resource का मतलब पैसा ही नहीं होता है. Resource का मतलब, your land, water, minerals, all these becomes human resource. That also becomes a resource. So resource mobilization में I'll be giving you insights as to how better mobilization can be done. देखो, maximum time will go in your conceptual understanding. Mains में कोई भी ज्यादा time नहीं लगता है. Reasons are very simple. Once you are done with concepts ना, तो मुझे सिर्फ बोलना ही है. मेंस के लिए, प्री के लिए अगर मान लो कंसेप्ट्स मैंने तुमको अच्छी तरह से समझा दिया, so then I need not bother. जिस तरह से मैं बातें कर रहा हूँ ना मेंस में, समझ में अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये टॉपिक वो टॉपिक, I'll start and I'll end. मेंस में तुमको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, because by the time you will be able to understand the concepts. So larger challenge for me will be your conceptual understanding, which is prelims based. So that's where 80% of the time will be given to. Understood? So prelims part takes a lot of time because those are concepts. Once you are done with concepts, so I do not need larger efforts, or also from your side also, you need not put larger efforts in understanding the mains perspective, because you start understanding the length and breadth of a particular topic. Then I'll be covering up investment models also, which we have followed after first 5-year plan, whether it's Harrod-Domer model, whether it's Mahalanobis model, whether it's Levis model, whether it's Manmohan Singh strategy, or whether it's Amartya Sen strategy, or whether it's Jagdish Bhagwati strategy, Gandhian philosophy, Nehruvian philosophy. All these things will be studying under investment models. And then infrastructure. Under infrastructure, this is a factual part. जो infrastructure होता है ना, वो largely factual part है that need to be marked up. But then I'll be giving you a source also जहाँ से you can derive materials related to it. And infrastructure means it may be roads, it may be railways, it may be a physical, social infrastructure also, like education, related to health. All these becomes part of infrastructure. Understood? Telecom and other things. So ports, airports, all these things will become part of infrastructure. Agriculture and issues, I'll not be taking up, a separate teacher will be there for taking up this particular part of agriculture. This will take 3 to 4 lectures, 4 to 5 lectures for him. So he'll be covering the agriculture part, rest part I'll be taking up.